स ब्रह्मश्च शिवस्य हरिसेन्द्रस्वक्षरः परमेश्वरात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रणकाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् अस्य देवदेवस्य श्रीवडगिलान्नगोरिब्रह्माण्डनायकस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीराजलक्ष्मी समेत श्रीवराह नृसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः सुवर्णा हृदय मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। ओम शिवराह लक्ष्मी नरसिंहसिंहाद्र्यपन परब्रह्मणे नमः। आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः पूजा असदेवदेवस्य श्रीमडगिलान्नगोरिब्रह्माण्डनायकस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्री राजलक्ष्मी समेत श्रीवराह नृसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः। छत्रमाचारयामि। अस्य देवदेवस्य श्रीमडगिलान्नगोरिब्रह्माण्डनायकस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीराजलक्ष्मी समेत श्रीवराह नृसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः। चामरेणावीजयामि आन्दोलिकामारोहयामि अश्वमारोहयामि गजामारोहयामि समस्तराजोपचारां देवोपचारां शक्योपचार तन्त्रोपचार यन्त्रोपचार मन्त्रोपचार विशेषपूजां समर्पयामि। हरि हरि नारायण आदि नारायण करुणिंचे मम्मेलो कमललोचनुडा हरि हरि नारायण आदि नारायण करुणिंचे मम्मेलो कमललोचनुडा श्रीराम रघुराम श्री महागुणधाम शत्रकोटिभिराम जगदभिराम हरि हरि नारायण आदि नारायण करुणिंचे मम्मेलो कमललोचनुडा लोकपालन राम लोकनायक राम चारुतारक नाम संग्राम भीम हरि हरि नारायण आदि नारायण करुणिंचे मम्मेलो कमललोचनुडा దండంబో దండంబో
దాసమానసలోలా వందనమో వందనమో వరపుణ్యశీల హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా జోహారు జోహారు సూర్యకోటి సంరక్ష శరణాబ్దే శరణాబ్దే జగ జగద్రాక్ష హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా శ్రీరామ రఘురామ శ్రీ మహాగుణధామ శత్రుకోటి విరామ జగదబే రామ హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా లోకపాలన రామ లోకనాయక రామ చారుతారక రామ సంగ్రామ భీమ హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో దండంబో దండంబో దాసమానసలోల వందనమో వందనమో వరపుణ్యశీల హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా జోహారు జోహారు సురకోటి సంరక్ష శరణాబ్దే శరణాబ్దే జయ జగద్రాక్ష హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా హరి హరే నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా హరి హరి నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా హరి హరి నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా హరి హరి నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించే మమ్మేలో కమలలోచనుడా ఓం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ సింహద్రియపన పరబ్రహ్మణే నమః ప్రసాదం శిరసా గృహణామి ఓం శాంతి 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 श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय
चिदानंद नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय चतुश्लोकी भागवतम ओम अहममेवासमेवाग्रे
नान्यद्यत् सद सत्सरं पश्चादहं यदेतच्च यो व शोष्यत सोऽस्म्यहम्। ॐ ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत दात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्महो तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ॐ यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ॐ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासु नात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ॐ श्रीमन् वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामिने नमः। ॐ श्रीमत्सुधाब्धितनयां श्रितसेवनीयां नित्यानवद्यनिगमान्त नितान्तगेयां पद्मालयां प्रणतरक्षण संप्रदायां श्रीनारसिंह दयितां श्रियमाश्रयामः। श्रीमन्वराह नरसिंह विभो कृपालो प्रहलाद मंदिर लसन्मणि पीठ वास वंदारु बृंद हरिचंदन सुंदरांग स्वामिन् त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। वैकुंठ माधव जनार्दन वासुदेव वाचाम गोचर महाविभव प्रभाव वात्सल्यपूर्ण सुगुणालय वारिजाक्ष श्रीनारसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। ప్రియమైన భక్తజనులారా, మీకందరికీ సప్రేమ నమస్కారం.
प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नमस्कार। Aujourd'hui, il y a un grand jour, le 24 avril 2020. Nous pose nous kalash pour nous Shri Narasimha Swami, Narsingh Dev. Et nous connaissons un bon participant depuis hier. Je ne pose de kalash et vratam, vrat karem, in commencé pour Narasimha Swami. Donc, nous, ici, Ashram Parameshwari Anand Nilayam, Ashram Boklima, nous, Zoji, nous pose kalash, à partir de Zoji, le 24 avril, les pour aller même, demain aussi pareil, 5 heures tantôt, nous Shri Narasimha Swami, Narsingh Dev so puja, et les pour aller même jusqu'à le 6 mai, Shri Narasimha Jayanti. Tous les jours, nous puja, nous kirtan, et nous pour lire un grand livre sacré appelé Bhagavatam, Bhagavad Katha. Nous avons beaucoup de livres sacrés, 4 Veds, 6 Shastres, 18 Puranas, Mahabharat, Ramayana, Upanishad. Comme ça, nous avons beaucoup de livres sacrés. Et parmi tous les livres sacrés, il y a 18 Puranas. Parmi ces 18 Puranas, Bhagavatam lit numéro 1. Et Bhagavatam, il y a 12 skandha dans nos livres sacrés, on appelle skandha. Nous sommes capables de dire chapitres. Il y a 12 chapitres dans Bhagavatam et 18 000 shlokas, 18 000 versets. Imaginez un petit coup, qui grandeur livre sacré il était. Ce livre sacré qui nous peut dire Bhagavatam, comment il vient? Je peux dire où? Tout d'abord, je peux dire qui veut dire Bhagavatam? Bhagavatam, littéralement, veut dire Manav Bhagavad Bhakti. Un jimun qui a la foi, dévotion pour bon Dieu, pour sa personne là même qui appelle Bhagavat. Ça veut dire, on finit de gagner l'idée, ce livre sacré qui appelle Bhagavatam, comment il peut être? Maintenant, Bhagavatam, comment il vient? « 5000 ans avant, il y a un grand rishi, qui appelle Ved Vyas. Sa grand rishi, Maharishi, rishi veut dire sage, un Maharishi, un grand sage, Ved Vyas, il écrit beaucoup de livres. Beaucoup de livres il écrit. Il y a un grand savant, un grand connaisseur, un grand sage. Il écrit un Mahabharat.
Mahabharata, un grand livre, littérature spirituelle. Il y a 100 000 shloks là-dedans, 100 000 versets. Il écrit 17 Puranas. Si vous faites l'inventaire, vous guettez par millions de shloks, versets, il écrit. Vous êtes capable de gagner l'idée qui qualité vidouane, qui qualité riche, intellectuelle, sur sagesse, sur l'éducation, connaissance qu'il tient, et qui qualité cerveau. Nous ne sommes pas capables de dire génie. Il n'est pas dit génie. Comme ça, je dis génie. Génie, si nous traduisons dans nos langues, nous pouvons dire Medhavi. Mais il n'est pas arrêté là. Il n'est pas juste Medhavi. Il y a Pragyan, Mahapragyan, Ritambhara. Les montées y aller, ou capable de gagner une idée, mais dans aucune langue dans ce monde-là, capable qu'on parle avec langue sanskrit. Donc, imaginez un petit coup qui qualité cerveau littéraire, Ved, Vyas, Maharishi. Donc, il écrit tout ça là. Mais, il est triste, chagrin, il est assis en bas de pied, tranquille, triste. Pas connaître combien de bananes il est assis comme ça, tranquille, triste. Un jour, Narad Muni, le temps il peut faire sa chemin là, il peut aller, il dit laisse-moi me rendre dans l'ashram pour Maharishi, Ved Vyas. Le temps il rentre dans son ashram, le temps il peut observer Ved Vyas Maharishi, il est triste. Et quand vous êtes une personne triste comme ça, vous finissez connaître ça. S'il est dans le gai, dans la joie, dans le contentement, ça aussi vous connaissez. Alors le temps il trouve lui bien triste, il coste côté lui, il dit hey, Ved Vyas Maharishi, toi un grand rishi, toi un grand sage. Ton l'esprit fort, ton buddhi, Vishala buddhi, ton intellect top, super, dans ce monde-là, peine même comme toi. Peut-être pas pour gagner personne encore comme toi, dans le futur. Tu es bien grand, bien supérieur. Tu écrit autant de livres, mais seulement, je trouve-toi triste, inassisé. Toi, tu trouves ça contentement-là dans toi, ça la joie-là, ça bonheur-là, dans toi-même. Comment tu as assisé? Chagrin comme ça, triste. Qui n'arrive, toi? Ved Vyas Maharishi, il est content le temps il trouve Narad Muni vini, parce que Narad Muni, lui aussi un grand sage, lui aussi un grand bhakta pour Narayana. Il fait lui namaskaram, swagatam, bienvenue, namaskaram, assisez. Il donne une jolie place pour assiser. Là, Narad Muni dit causez, qui arrive toi? Tu es autant grand, autant supérieur, autant intelligent, mais seulement, tu écris tout ça livre-là, tu es bien content, tu es bien d'enguer, mais on trouve toi bien triste. Qui n'arrive toi comme ça? Là, Ved Vyas dit, ô Mahamuni, ô grand bhakta Narada, je ne sais pas qui faire. Je
Mon écrit autant livre, oui, tu as raison. Mon écrit tout ça là, mais moi pas connais qui faire, moi triste, moi pas gagner une satisfaction. Pena ça, santosham, ça santushti, sa satisfaction là, santrupti, satisfaction, moi pas gagner. Moi pas connais qui faire, moi à cause de ça, moi comme ça. Toi, tu es grand, tu promenais partout. Ben, dis-moi un petit coup, qui m'a besoin de faire? Comment sa tristesse là pour aller? Comment je peux gagner mon contentement, mon joie, mon bonheur? Comment je peux satisfaire? Je peux trouver ce contentement là dans mon cœur? Dis-moi, toi, tu es grand, toi aussi tu es grand. Nous tout respectons, toi. Tout le David t'a respecté, toi. Dis un petit coup, dis à moi. Léla. Narad Muni dit Ali. T'as trop écrire, t'as trop lire, t'as trop penser que tu es un grand connaisseur. En fait, tu es un grand connaisseur. Tu es un grand savant, livré, mais seulement, pas juste quand fini d'écrire autant de livres, ton rôle fini, ton devoir arrête là même. Et là, Vedvyas peut écouter, dire oui, Swami, oui, Narad Muni. Dis-moi, comment je peux faire? Il dit, get ça, mon fini comprendre toi. Il y a un manquement. Il y a un manquement quelque part. Je peux dire toi qui ça manquement dans ça. Ton écrit Mahabharat. Ton écrit 17 Puran. Ton faire Vyavastha. Ton faire autant de traductions pour Ved. À cause de ça, ton gagne ton titre Ved Vyas. Ton fait Vyavastha. Ton reste tout en ordre pour le monde. Gagne sa bonne connaissance, science, l'éducation. Tout ça là, c'est bon même. Mais, parmi tous ces livres qui t'ont écrit là, est-ce qu'ils t'ont écrit qui livre basé le bhakti, dévotion, la foi. Et sans la foi pour bon Dieu, sans dévotion pour bon Dieu, tout dans vide. Ved Vyas, Maharishi, sans même manquement là. Jayo, Narad Muni, vous pouvez comprendre ce qui te peut dire moi. Exact. Moi d'accord. Mon est concentré dans écrire, concentré dans l'éducation, connaissance, science. Mon allait comme ça, mon l'étang il allait comme ça, mon lazi il allait même comme ça, et livré bhakti. Moi pas faire bhakti pour Bhagwan, moi pas faire bhakti pour bon Dieu, moi pas donne la foi, mon dévotion pour sa grand bon Dieu là. Tu as entièrement raison. Maintenant, d'accord, mon fini comprend toi. À ce qui moi pour faire. Il y a Ved Vyas Maharishi. Tu connais écrire bien toi. Tu as un grand cerveau. Tout le monde connaît. Tout le monde David tu connais. Ben, faire ça même. Écrire encore un livre qui est basé le bhakti et Bhagwan. Bhakta, bhakti, Bhagwan.
écrire. Ce livre-là, il est basé sur la foi, et dévotion, bon Dieu. Les là, ça pour compléter. Get moi-même, Vedvias, dans naissance passée, moi, j'ai un enfant serviteur, moi j'ai un enfant d'assis, servante, esclave. Dans mon naissance passée, moi, je suis bien pauvre. Mon père dit mon papa. Mon maman, tu peux travailler contre la case du monde comme ça. La case Brahman, aller, tu peux travailler, nettoyer, etc. Là, mon maman, tu peux amener moi parce que moi, tu peux petit. Moi, j'ai 2 ans, 3 ans, mon maman, tu peux sailler moi. Mais mon maman, il gagne une jolie occasion, travail, côté ban brahman, côté ban grand pandit, côté ban grand pandit. Et mon petit enfant, moi, peut grandir comme ça, écrire. Vedvias est extra content, tellement il est content. Il n'est pas même fini remercier. Pas peut finir remercier. Pas peut finir montrer sa reconnaissance pour Narad Muni. Narad Muni dit, ok, allez faire ce qui m'a dit à toi, tu pour heureux. Toi-même, tu pour rire. Toi-même, tu pour avoir beaucoup de contentement dans toi. Allez, fais ça même. Alors là, Narad Muni n'allait et Vedvyas Maharishi, pas tardé, et il commence à écrire Bhagavatam. Et ce Bhagavatam, il bien écrire 12 chapitres, 18 000 shloks, versets. Et moi pour dire, les autres rishis, les autres bhaktas qui ont causé le Bhagavatam avant qu'ils nous commencent à lire un petit peu Bhagavatam. Durlabhaiva katha loke Srimad Bhagavatod bhava koti janma samuthena punya naiva tu labhyate. Après millions, après 10 millions, koti veut dire crore, koti veut dire 10 millions. Après 10 millions de naissances, comme un être humain, et les temps où on fait beaucoup du bien, beaucoup bon travail, ce fruit, ce punya, et là, on gagne l'occasion, opportunité pour écouter Srimad Bhagavatam. Get ça, hein? Faudrait 10 millions de fois on est comme un être humain et on fait beaucoup bon travail sur la crème, sur punya, sur du bien qui vous gagne les temps où on écoute Bhagavatam. Ça veut dire pour du monde ordinaire, du monde boire sa nectar là, définitivement. Sada sevya, Srimad Bhagavati Katha, Yasyaha Shravanam Atrena Harishcha Tam Samashrayet. Besoin boire tous les jours sa nectar Bhagavatam là. Boire tous les jours, écoute ce Katha Amrit, Katha Amritam. Sa Katha, sa histoire bon Dieu, extra doux, extra bon, sa vie, sa Panchamrit là. Et ce qui est écouté comme ça, avec beaucoup de la foi, avec ce lesquels il écouté, bon Dieu descend dans ce lesquels, il reste dans ce lesquels. Et ça, du monde là, il réalisé. Définitivement.
de réaliser. Plus qu'un million de bananes. Bien longtemps. Nous avons plus qu'un million de bananes. Longtemps. Il y a deux frères. Un qui s'appelle Hiranyaksha et deuxième appelle Hiranyakashipu. Alors, tous les deux frères, sont démons. Deux frères, démons. Et tellement ils faux, gros, gras, long, bien faux. Ils attaquent pays par pays. Les rois, les rois capables de débouter devant eux. Tout y ban les rois. Rase du bien. Rase l'eau, diamant, perles. Et ils crasent le pays. Beaucoup de peuples souffert. Et il y a les comme ça. Et aller comme ça. Alors, les là qui arrivaient, guetter tout ban David, Devta, père. Laisse du monde, peuple, ban David, Devta, ban saint, ban grand, ils tout une paix, ça deux là. Et quand ils passé, fait comment dire, ils rentrent dans un ashram. Sans pitié, ils touillent tout swami, sannyasi, touillent tout ban dévot, tout ban personne, c'est qu'ils ont besoin, tout y écraser, briser, mettre du feu. Comme ça même peut aller. Ça affaires-là peut aller, pas capable. Tout le monde peut crier, peut pleurer, peut y aller. Finalement, qui est arrivé? Ban Devi Devta, ils ont pleuré que Brahmadev. Brahmadev, le créateur, Brahmadev. Et on raconte qui misère, tout le monde, peuple, entier le monde, pas dans aucun pays tranquille, pas dans aucun pays et dans la joie, bonheur, contentement, à cause sa deux frères démons, Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Donc, s'il vous plaît, protège-nous, protège les peuples, protège tout le monde, protège le monde. Sinon, ça deux-là, je peux finir ça le monde là. Les là, Brahmadev, le créateur, dire, pas besoin de tracasser, un petit peu de patience encore, et je peux trouver ça deux. Là, je peux payer pour ça, et ça deux là, ça deux démons, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, ça deux frères là, pour nous autres la fin. Un petit peu de patience pour le moment. Alors, voilà, là, Bhagavatam commencé. Et nous pouvons mettre une petite pause ici. Après, nous pouvons continuer. Demain, 5 heures, avec nous puja pour Shri Narasimha Swami puja, Shri Narsingh Dev, son grand puja, nous Simhadri Appanna, son grand puja, demain pour continuer 5 heures. Pas raté. Avant de terminer là, donne-moi encore 2 ou 3 minutes pour terminer là, pour aujourd'hui. Une petite pause. Ved Vyas, il écrit autant de livres, autant grands intellectuels, intellectuellement faux, mais seulement il peut dans le contentement, peut dans la joie, peut dans le bonheur. Ça peut montrer, pas juste lire, écrire, compter, du monde là fini, il pour vivre heureux. Peut-être, dans ça, le monde matériel là, le monde matérialiste, les points dans tout confort matériel, mais seulement sa contentement intérieur
sa tranquillité d'esprit, sa manas shanti, tranquillité d'esprit, atma anandam, sa bliss, pas qu'à comparer, l'état nous dit anandam, anand, ça coûte li pour gagner ça du monde là. Quand même, combien vous lire, écrire, qu'on compter. D'ailleurs, on finit gagner preuve là, Vedvyas. Est-ce qu'il est capable de comprendre quelqu'un en Vedvyas, Maharishi? Pas qu'à comparer. Ben, nous, du monde ordinaire, un petit nous lire, écrire, quand même, qui qualité titre ou un aimé PhD, aimé LLB, ou ajoute tout alphabet qui est là, avec ou non. Mais, pour gagner tranquillité d'esprit, la joie, contentement dans les cœurs, ça existe quand on trappe les pieds bon Dieu, quand on donne ou la foi ou l'équerre pour ça bon Dieu là, mais là même. Voilà, demain nous pour continuer nous Bhagavatam. Et moi pour dire ou pas rater, voilà nous pouvons terminer pour aujourd'hui. Comment on fait que Dieu, ce n'est qu'une pause. Voilà. Alors, demain, pas rater, rendez-vous 5h exact. Merci. Om Namo Narayana. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. हारती हारती मंगलारती श्री विष्णुव को शुभ हारती 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 मंगलारती श्री विष्णुव को शुभ हारती 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 मंगलारती श्री विष्णुव को शुभ हारती
నరసింహ స్వామి నీకు మంగళారతి. నరసింహ స్వామి నీకు మంగళారతి. ఆది నారాయణునికి శుభహారతి. ఆది నారాయణ నారాయణునికి శుభహారతి. హారతి హారతి మంగళారతి, శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. సింహద్రప్పన్న నీకు మంగళారతి. సింహద్రప్పన్న నీకు మంగళారతి. శ్రీ వెంకటరమణునకు శుభహారతి. శ్రీ వెంకటరమణునకు శుభహారతి. హారతి హారతి మంగళారతి, శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. దశరూప దేవునకు మంగళారతి. దశరూప దేవునకు మంగళారతి. శ్రీ భూమి మిత్రునకు శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. సింహగిరి వారికి మంగళారతి. సింహగిరి వారికి మంగళారతి. అప్పన్న స్వామికి శుభహారతి. అప్పన్న స్వామికి శుభహారతి. హారతి హారతి మంగళారతి, శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. హారతి హారతి మంగళారతి, శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. హారతి హారతి మంగళారతి, శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. హారతి హారతి మంగళారతి, శ్రీ విష్ణువుకు శుభహారతి. శ్రీ విష్ణు
विष्णु को शुभ हारती, श्री विष्णु को शुभ हारती, श्री विष्णु को शुभ हारती। ओम वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमारुत्य वर्णं तपसस्तु पारयत् सर्वाणि रूपाणि विचित्रदेर्हनमानि कृत्वाद्भिवन्दनास्ते। ॐ तच्चम्यो राहुनेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवदये दैवेः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजो अन्नोऽष्टद्विपदे हम चतुष्पदे। ओम शिवराह लक्ष्मी नरसिंह सिंहद्वयपन परब्रह्मणे नमः। कर्पूर मंगल निरञ्जनं समर्पयामि, निरञ्जनं तदनन्तरं सुदाचमन्यं समर्पयामि। गोविन्द गोविन्द। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखपात्मभेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगम्, शान्तिराप शान्तिरौषधय, शान्ति वनस्पतय, शान्ति विश्वदेव, शान्ति ब्रह्म, शान्ति सर्वगं, शान्ति शान्तिरेव, शान्ति साम शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री नरसिंह स्वामी की, श्री नरसिंह स्वामी की, श्री नरसिंह स्वामी की।
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्